Satellite operations and control will be carried out from our master control facility, Hassan, and in the coming few weeks, the satellite will reach its destination of the geostationary orbit. You may like to see a video glimpse of this launch. Thank you. आपको बता दें, पाकिस्तान जब इससे हट गया तो उसके बाद साउथ एशिया इसका नाम हुआ है। प्रोजेक्ट पर 450 करोड़ रुपए का खर्चा आया है और GSAT-9 रॉकेट से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। Which protects the satellite during the atmospheric phase of की तरफ से ये तस्वीरें जारी की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि किस तरह से ये सैटेलाइट जो है वो न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि मालदीव और श्रीलंका जैसे तमाम साउथ एशिया के देशों के लिए, सहयोगी देशों के लिए मदद करेगा और तकनीक के रास्ते खोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रीहरिकोटा से GSAT-9 रॉकेट से जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है उस पर बधाई दी है। हमारे वैज्ञानिकों की एक बड़ी उपलब्धि है। 6 देशों को कम्युनिकेशन फैसिलिटी मिलेगी जिसमें अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका शामिल है, बांग्लादेश। तो ये 6 देश हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, इन तमाम देशों को कम्युनिकेशन के क्षेत्र में यानी कि ये सैटेलाइट जो है सभी देशों के लिए मिलकर काम करेगा और 450 करोड़ रुपए का इस सैटेलाइट पर कुल खर्च आया है और सैटेलाइट नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बधाई संदेश में कहा है। सार्क सैटेलाइट एक संयुक्त तौर पर ये तमाम देश जो हैं मिलकर काम करेंगे और मिलकर जो सूचना तकनीक है उसके क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में इस सैटेलाइट के जरिए प्राप्त होने वाली तमाम जानकारी जो है वो साझा करेंगे। तो अपने आप में ये बेहद गौरवपूर्ण लम्हा है। आप देख सकते हैं कि सभी देशों के, श्रीलंका के, बांग्लादेश से, भूटान से, नेपाल से, मालदीव से, हर जगह के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं क्योंकि सभी के लिए ये संयुक्त मौका है। हर एक्सेलेंसी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी अब बांग्लादेश, His Excellency Prime Minister Sherin Tobgay of Bhutan, His Excellency President Abdullah Yameen of Maldives, His Excellency Prime Minister Pushpakamal ji, Nepal, His Excellency President Maithripala Sirisena ji, ladies and gentlemen, Namaskar. Excellencies, today is a historic day for South Asia, a day without precedence. 2 years ago, India made a promise to extend the advanced space technology for the cause of growth and prosperity of our brothers and sisters in South Asia. The successful launch of the South Asia satellite marks the fulfillment of that. With this launch, we have started our journey to build the most advanced frontier of our partnership. With its position high in the sky, this symbol of South Asian cooperation would meet the aspirations of economic progress of more than 1.5 billion people in our region and extend our close links into outer space. Excellencies, I am immensely grateful to my fellow leaders from Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Maldives, and Sri Lanka for joining me today to celebrate this launch. I also deeply appreciate the strong and valuable support extended by your governments, without which this project would not have been possible. Our coming together is a sign of our unshakable resolve to place the needs of our peoples in the forefront. It shows that
Our collective choices for our citizens will bring us together for cooperation, not conflict. Development, not destruction. And prosperity, not poverty. Excellency, this is first of its kind project in South Asia. And to this project, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Sri Lanka, and India will together achieve effective communication, better governance, better banking services, and better education in remote areas, more predictable weather forecasting, and efficient resource mapping, linking people with top-end medical services through telemedicine, and a quick response to natural disasters. Space technology will touch the lives of our people in the region. The satellite will provide services specific to individual countries as per their own needs and priorities, as also common services. In achieving this goal, I congratulate the Space Science Fraternity of India, and in particularly the Indian Space Research Organization ISRO. The ISRO team had led from the front in developing the South Asia satellite as per the region's requirement and flawlessly launching it. Excellencies, as governments, our most important task is to secure growth, development, and peace for our people and communities. And I'm convinced that when we join hands and mutually share the fruits of knowledge, technology, and growth, we can speed up our development and prosperity. I thank you all for your presence and congratulate you once again in our shared success. Thank you very much.